Welcome to WeLearn, Virtual Learning Network. This is session number 6, Macroeconomic Policies. Topics which we will cover in this session are Introduction, Meaning of Macroeconomic Policy, Meaning of Fiscal Policy, Instruments of Fiscal Policy in India, Objective of Fiscal Policy, Meaning of Monetary Policy, Instruments of monetary policy in India, objective of monetary policy, and role of RBI. First comes to the introduction. The term macroeconomic in economy means related to the nation. Macroeconomic policy thus means a policy about economic aspects of a country. Macro is related to नेशन, हमारी कंट्री से रिलेट करता है, और मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. अ नेशनल लेवल पॉलिसी इज़ फ्रेम्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री. ये नेशनल लेवल पे ये पॉलिसी सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है. इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय इट्स वेरियस डिपार्टमेंट्स और बाय द स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस क्रिएटेड फॉर दिस पर्पज़. The central government of a country follows specific policies with respect to agriculture, industry, service, employment, money supply, credit, taxes, government expenditure, borrowings, etc. All these are macroeconomic policies. These policies are related to agriculture, industry, service, employment, मनी सप्लाई, क्रेडिट, टैक्स, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड बोरोइंग, इन सब से रिलेट करती है. नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी. मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी बेसिकली दो तरह की पॉलिसीज़ होती हैं, फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी पॉलिसी. फिस्कल पॉलिसी में क्या होता है? फिस्कल पॉलिसी हमारी गवर्नमेंट की इनकम और एक्सपेंडिचर को शो करती है. गवर्नमेंट को मनी क्यों चाहिए? कंट्री एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए, अपनी कंट्रीमैन को उनकी फैसिलिटीज़, उनकी डेली एक्टिविटीज़ के लिए हमें मनी की ज़रूरत होती है, वो हमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है. मेन सोर्स क्या है गवर्नमेंट की इनकम का? टैक्स. वो हमसे टैक्स लेती है जिसके थ्रू वो हमें फैसिलिटीज़, वो हमें हमारी ज़रूरत की चीज़ें प्रोवाइड करती है. नेक्स्ट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी. मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली एम करती है मनी रेगुलेशन पे. हमारी मनी सप्लाई कैसे कंट्री विद इन कंट्री कैसे रेगुलेट कर रही है. इट हैज़ इट्स इफेक्ट ऑन इंटरेस्ट स्ट्रक्चर, क्रेडिट स्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट स्ट्रक्चर, प्राइसेस, फ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एट्सेट्रा. पॉलिसी इज़ प्रिपेयर्ड बाय द सेंट्रल बैंक. हमारी पॉलिसी सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री बनाती है और हमारे कमर्शियल बैंक इसे इम्प्लीमेंट करते हैं. हमारा सेंट्रल बैंक है आरबीआई और हमारे आईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये सब हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं. एसबीआई, पीएनबी, ये सब कमर्शियल बैंक हैं. मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसीज आर कॉमन. The ultimate aim of both policies is economic growth and development of the country. दोनों का एक common objective है to increase the economic growth of the country. Next is meaning of fiscal policy. Accordingly, fiscal policy deals with government powers to tax and spend for the purpose of achieving certain declared policy objectives which generally relate to price, output and employment. हमारी fiscal policy क्या होती है? गवर्नमेंट की स्पेंडिंग और अर्निंग कैपेसिटी को शो करती है. स्पेंडिंग कैपेसिटी को हम कैसे शो करते हैं कि गवर्नमेंट किस लिए और कहाँ पर अपनी मनी स्पेंड कर रही है. जनरली गवर्नमेंट की स्पेंडिंग कहाँ होती है? टू गिव द एम्प्लॉयमेंट, to achieve the target of the
ऑलरेडी डिक्लेयर्ड पॉलिसी, ये हमारी स्पेंडिंग होती है, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग होती है, और उनकी अर्निंग क्या है, वो कहाँ से अर्न करते हैं, ओनली थ्रू टैक्स. देयर आर टू फंडामेंटल इश्यूज ऑफ फिस्कल पॉलिसी. नंबर 1, शुड टैक्सेस बी रेज्ड और लोअर्ड, क्या टैक्सेस को हम बढ़ाएं या कम करें. सेकेंड, शुड गवर्नमेंट स्पेंडिंग बी रिड्यूस्ड और इंक्रीज्ड, क्या उनकी स्पेंडिंग्स, जो वो पैसे खर्च कर रहे हैं, क्या उन्हें कम करना चाहिए या बढ़ाना चाहिए. The main concern of fiscal policy is the way in which the government raises and spends money. किस तरह गवर्नमेंट अपने पैसे को बढ़ा रही है और कम कर रही है, फिस्कल पॉलिसी उस पे डिपेंड, फिस्कल पॉलिसी उसके अराउंड कंसर्न करती है. गवर्नमेंट रेजेस मनी थ्रू टैक्सेशन, बोरोइंग एंड प्रिंटिंग न्यू मनी. किस तरह रेज करते हैं गवर्नमेंट मनी? थ्रू टैक्स बढ़ा के, बोरोइंग एंड प्रिंटिंग न्यू मनी. Fiscal policy in the modern sense refer to deliberate action by the government in its spending and taxing activity to achieve certain objectives. Fiscal policy basically किस पे डिपेंड करती है? फिस्कल पॉलिसी का क्या एक्शन है, किस लिए रेफर करती है? Actions by the government in its spending and taxing activities to achieve the objective. Next are the instruments of fiscal policy in India. Fiscal policy के लिए हम क्या क्या instruments use करते हैं? Fiscal policy in Indian context involve the ways in which government raises and spends money. How the government now raises the money. These are technical terms as sources of revenue in public finance. These sources of revenue are one set of instruments. In the Indian context, there are three ways of raising money of fiscal policy. हमारे पास 3 तरीके से गवर्नमेंट अपनी मनी को रेज कर सकती है. 3 तरीके हैं जिससे गवर्नमेंट मनी रेज कर सकती है. ये है टैक्स रेवेन्यू, नॉन टैक्स रेवेन्यूज एंड कैपिटल रेवेन्यूज. टैक्स रेवेन्यूज में कैसे हम कौन कौन से टैक्स देते हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट की सोर्स ऑफ इनकम बढ़ता है. ये है कॉरपोरेशन टैक्स, इनकम टैक्स, इंटरेस्ट टैक्स, एक्सपेंडिचर टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, कस्टम्स, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, service tax, other taxes and duties, taxes on union territories. इन टैक्सेस को हम पे करते हैं, एक कॉमन मैन पे करता है, तभी ये गवर्नमेंट का सोर्स ऑफ इनकम बनता है. नेक्स्ट आर नॉन टैक्स रेवेन्यूज. इट कंप्राइज ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टू स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज. नंबर 2, इंटरेस्ट पेबल बाय गवर्नमेंट एंटरप्राइज. नंबर 3, profits from public sector enterprise. Number 4, external grants. Number 5, receipts from union territories. Next are the capital receipts. Capital receipts are the main items of capital receipts are loan raised by the government from public, which are called market loans, borrowing by government from RBIs and other parties through the sale of treasury hills, loan received from foreign government and bodies, and recovery of loan granted by the central government to the state union territory governments. Broadly, capital receipts constitute fresh loan made and loan recovered. Out of the total borrowing, the loans from the RBI constitute defect financing. The implication of defect financing is that this directly lends to pricing of notes, lending to yet addition of money supply in the economy. Now we started the ways how government earn money. Now we will study what are the ways of spending money. The budget of the central government classifies public expenditure into
plain expenditure and non-plain expenditure. Each in turn is subdivided into revenue expenditure and the non-revenue expenditure, that is the capital expenditure. So first comes to the plain expenditure. Plain expenditure includes provision of expenditure for projects, programs, schemes, which includes such as 5-year plan. So the income or the money which is spent to achieve the target of these schemes are the plain expenditure, plan expenditure. Next is non-plan expenditure. Non-plan expenditure cover all expenditures of government not included in the plan. It includes expenditure obligatory in nature, for example, interest payments, expenditure on defense and internal security, expenditure on maintaining the assets creating in the previous plan, expenditure on continuing service and activities at levels already reached in the plan period. Next are these plan and non-plan expenditure are divided into revenue expenditure and capital expenditures. So the revenue expenditures are the expenditure which do not result in certain asset, जो कि आपको कोई asset नहीं देती हैं. It is the normal running of government departments and various services, interests, etc. And the capital expenditures are, these consist of expenditure on acquisitions of assets like land, building, machinery, equipments, shares, etc. Next are the objectives of fiscal policy. Main objectives क्या हैं fiscal policies के? To promote economic growth. Economic growth को promote करने के लिए government promote करती है किस तरह business को, जो कि हमारी economic development के लिए भी important है. Creating employment opportunities. Government नई नई employment opportunities provide करती है. Ensuring stability in prices. Fiscal policy किस तरह help करती है stability को प्राइस को स्टेबल रखने के लिए. It plays an important role in avoiding fluctuation in prices. Government ensures stability in prices, at least of essential goods for consumption and production, through fair price shock, through limiting tax, through buffer stock. इस तरह गवर्नमेंट हेल्प करती है आपकी स्टॉक्स रख के, प्राइस शॉप एमआरपी को कम करके, या आपको टैक्स कम करके, या आपको कुछ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करके गवर्नमेंट प्राइस स्टेबिलिटी इंश्योर करती है. रिड्यूसिंग इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम. नेक्स्ट इज रेगुलेटिंग फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन एक्सचेंज. फॉरेन ट्रेड और फॉरेन एक्सचेंज को रेगुलेट करके हम गवर्नमेंट हेल्प करती है. Next are instruments of monetary policy in India. The central bank relies on 5 instruments to influence money supply. Central bank 5 objectives, 5 instruments पे depend करता है जो कि हमारी monetary supply को control करते हैं. They are reserve ratios, bank rates, open market operation, margin requirement and moral suasion. The main objectives of monetary policies are: number 1, economic growth, employment, economic equality and foreign exchange. Monetary policy के main objectives क्या होते हैं? economic development और उसको economic growth को बढ़ाना, उसको स्पीड अप करना. तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरह होती है? ग्रोथ के थ्रू. एम्प्लॉयमेंट होगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, इक्वालिटी होगी तब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी,
और फॉरेन एक्सचेंज होंगे, जब हमारी ट्रेड एक्सचेंज होंगे तब भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होती है. नेक्स्ट इज रोल ऑफ आरबीआई. RBI plays three types of role. Number one, the traditional role that a commercial bank is expected to play. The supervisor role, that is regulation of functioning of commercial bank in India. And next is promotional role, that is helping the developmental process in the country. So following are the questions which are based on this session. Number one is name the three ways of raising money in the government of India. Number two is distinguish between plan and non-plan expenditure of government. Number three, explain the meaning of following: macroeconomic policy, fiscal policy, and monetary policy. These are the questions based on the session. Thank you. Happy learning. We learn.